Okay, good evening, everyone. Welcome to the Ravel Digital Month's Virtual Summer Camp Season 2. Myself, Deepak here. I am here to take the coding session for the next 15 days. So, have a nice day. Everyone. So, I hope that we can start now. Okay, so let's start with my brief intro. My name is Deepak Kumar. Currently, I am pursuing my engineering from Nagpur, and also I have started working as a software developer currently at a remote-based organization based in US. The organization name is Kling. Okay, so आज के सेशन में क्या करने वाले हैं वो देखते हैं फिर अभी. So as I mentioned that I will be taking the coding session for the next 15 days. So in the today's session, firstly, I will brief about that what's coding and what's it like to be in the software development world. आप लोग ने पहले सुना होगा जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी ने ऐसे ऐप बनाया हुआ है कोडिंग के थ्रू या किसी ने एक गेम बनाया हुआ है कोडिंग के थ्रू. तो आज ये देखने वाले हैं कि कोडिंग के थ्रू बस यही पॉसिबल है या गेम ही क्रिएट कर सकते हैं या ऐप क्रिएट कर सकते हैं या क्या कर सकते हैं कोडिंग के थ्रू, कोडिंग का इम्पोर्टेंस क्या है आगे और कोडिंग का क्या स्कोप है और आप लोग कोडिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हो और आप लोग कैसे कोडिंग में इंटरेस्ट मेंटेन करते हुए आगे कोडिंग कर सकते हो. तो ये लेसन है, ये सेशन ऐसा नहीं रहेगा कि बस मैं करते रहूंगा, तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हो अपने एंड में. तो उसके लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स रहेंगे सेशन के लिए, फॉर एग्जांपल लैपटॉप या फिर इंटरनेट कनेक्शन और अगर कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना हो तो फिर आज वो भी देखेंगे मतलब क्या रिक्वायरमेंट्स रहेंगे ये सेशन कंप्लीट करने के लिए फॉर द नेक्स्ट 15 days. और फिर फॉर द नेक्स्ट 15 days वी विल बी वर्किंग ऑन समथिंग सच एज टू क्रिएट अ सिंपल गेम. तो आप लोग ने वो गेम पहले खेला ही होगा पर हम लोग देखेंगे वो गेम कैसे क्रिएट कर सकते हैं. तो आज मैं बस ये दिखाऊंगा एज अ एंड स्क्रीनशॉट ऑफ द गेम, मतलब एट द एंड जब 15 days हमारा कंप्लीट होगा या बिफोर 15 days, तो जो हम लोग गेम डेवलप करेंगे वो कैसे दिखने वाला है और कौन सा गेम डेवलप कर रहे हैं और आई मीन कैसे डेवलप करने वाले हैं वो भी देखेंगे. और द नेक्स्ट थिंग इज दैट वी विल बी हैविंग अ लुक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ 15 day सेशन. सो आप लोग आज सोच रहे होंगे जैसे आज के सेशन तो ठीक है कोडिंग के बारे में पता चलेगा, फिर ये पता चलेगा कि नेक्स्ट 15 days में क्या होने वाला है, क्या चाहिए रिक्वायरमेंट्स कोडिंग सेशन लेने के लिए. बस स्ट्रक्चर कैसे होने वाला है सेशन का, फॉर एग्जांपल फर्स्ट डे में हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड डे में हम लोग क्या करेंगे, थर्ड डे में क्या करेंगे, फोर्थ डे में क्या करेंगे, how it's like to be in the 7th day of the coding session. So it won't be something that I will be doing and just you will be watching silently. You can also do from your end. So for that I am here. So it will be completely collaborative session. So what I will be doing on my end, you can also try on it on your end, and you can see if that works, then that's cool. And if that doesn't work, then I am here to help you. और फिर सेशन के एंड में वी विल हैव अ ब्रीफ क्वेरी सेशन. अगर आपको ये सेशन कि इन इन बिटवीन कोई क्वेश्चन हो तो मैं वो भी देखते रहूंगा और फिर लास्ट में अगर सेशन जब कंप्लीट हो जाए कोई डाउट हो तो वो भी आज हम लोग ये आज के सेशन में देखने वाले हैं. तो फिर आई होप दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड नाउ सेशन. Okay, so the first thing is, as I mentioned, that we will be going through what is meant by coding and how we can start coding. Coding के थ्रू क्या कर सकते हैं. बहुतों के माइंड में ये भी डाउट होगा कि एग्जैक्टली कोडिंग है क्या. मतलब सुना तो बहुत ने होगा, बहुत को पता भी होगा कि किसी ने क्लास 9th में कोडिंग के थ्रू एक गेम क्रिएट किया हुआ है, किसी ने एक ऐप क्रिएट किया हुआ है, किसी ने वेबसाइट क्रिएट किया हुआ है. तो बहुत सारे डाउट्स होते हैं जो जब स्टार्ट करने वाले क्या कोडिंग सच में इतना कॉम्प्लेक्स है कि कोई भी कर सकता है या इतना ही सिंपल है या कोई भी कर सकता है.
तो इस ये स्लाइड में हम लोग ये देखने वाले हैं कि एग्जैक्टली कोडिंग क्या है। तो अगर मैं ऐसे सिंपल वर्ड्स में बोलूँ कि एग्जैक्टली कोडिंग क्या है, तो फॉर एग्जाम्पल आपको मैंने अगर बोला कि 5 नंबर्स को ऐड करो, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, तो वो आप तो मैनुअली कर सकते हो इजीली। पर अगर मैंने ऐसे ही बोला कि आप 1 लाख नंबर्स को ऐड करो, तो ये जो प्रॉब्लम है ये थोड़ा वहां पे कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ठीक है, तो जैसे अगर 1 लाख नंबर को हम लोग ऐड करने बैठे तो पता नहीं कितना टाइम लगे, और एट द एंड जो रिजल्ट आएगा वो करेक्ट आएगा ही नहीं। तो उसके लिए मतलब जब हम लोग के पास्ट में जो भी थे कंप्यूटर इंजीनियर, जो भी साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसका डिस्कवर किया दैट वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स। So we can make the computers understand a common language, and that computer will help in making our complex problems solve in day to day life easily. So it's not like that मैंने बस इंग्लिश में टाइप किया तो बस ये जो भी मैंने टाइप किया वो कैलकुलेट हो जाए। फॉर एग्जांपल आपको अगर कैलकुलेट करना है ये 1 लाख नंबर का सम करना है, तो आपको ये ऐसा नहीं रहे कि बस आपने लिखा कि सम द 1 लाख नंबर तो वो हो जाएगा। तो उसके लिए मतलब सिंटैक्स रहते हैं हर एक, मतलब जैसे कोडिंग का एक सिंपल सा लैंग्वेज नहीं। फॉर मैं एग्जांपल लूँ तो एक जो अभी लैंग्वेज हम लोग यूज करने वाले हैं वो पाइथन है। तो वैसे बहुत सारे लैंग्वेज और हर एक लैंग्वेज का अलग अलग सिंटैक्स है। तो फिर हम लोग वो देखने वाले हैं कि मतलब जैसे पाइथन के थ्रू हम लोग कैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आज के सेशन में तो नहीं, कल या परसों के सेशन में हम लोग ये देखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे ही मेंशन दैट इफ वन इफ वन नीड टू ऐड 1 लाख सम ऑफ 1 लाख डिजिट्स, so how can they add that? So here you can see that how a complex problem can be solved within a few minutes or few seconds just using a single line of code that we call as a coding. And the second thing, the most common thing you might have also heard that we can create games from the coding. So आप लोग ने पबजी जैसे गेम्स या मारियो डेव, और फिर जैसे और सिंपल एग्जांपल ऑफ गेम का तो टेट्रिस जो स्नेक गेम है वो तो सबने खेला होगा। तो फिर वो गेम कैसे क्रिएट हो सकता है कोडिंग के थ्रू, वो आज हम लोग देखने वाले हैं। सो दिस इज द टू थिंग। सो द फर्स्ट थिंग, दो सबसे मतलब यूजफुल थिंग है यही है कि हम लोग जो कोडिंग यूज करते हैं, इट्स नॉट लाइक टू डेवलप गेम्स और एनीथिंग एल्स, इट्स लाइक वी वांट टू सॉल्व द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ द कोडिंग। And the second thing I mentioned that we can create games. Yeah, PUBG has been created with the help of the coding, but that's a complex coding stuff, so we won't be going through that. अगर आपको फ्यूचर में कोडिंग में इंटरेस्ट होगा तो आप वो ट्राई जरूर कर सकते हो, या पबजी क्या पबजी से अच्छे गेम्स क्रिएट कर सकते हो। द थर्ड थिंग इज दैट यूजिंग द कोडिंग वी कैन क्रिएट एप्स एंड वेबसाइट्स। तो जैसे आप सभी के पास अभी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने अभी तो फेसबुक यूज किया ही होगा। तो फेसबुक एक सिंपल से एक ऐप है, एंड्रॉइड एंड्रॉइड स्टोर पे भी है, एप्पल प्ले स्टोर पे भी है, या उसके वेबसाइट भी है। तो वो जो क्रिएट हुआ है तो वो भी कैसे क्रिएट हुआ, वो भी कोडिंग के थ्रू क्रिएट हुआ है। तो वो जो है एप्स मतलब वो क्यों क्रिएट किए जाते हैं, जैसे जो भी नॉर्मल लाइफ ह्यूमन है इनको एक अच्छा एक्सपीरियंस देने के लिए। फॉर एग्जाम्पल द मेन गोल ऑफ कोडिंग, आई सॉरी, द मेन गोल ऑफ फेसबुक इज टू कनेक्ट द पीपल लिविंग सोशली अपार्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ दिल्ली में हूँ और अगर कोई अगर यूएसए में है, तो मैं फेसबुक के थ्रू उससे अगर थोड़े से भी चैट कर सकता, या उससे मैं लाइव वीडियो कॉल पे बात कर सकता। और ये नहीं होता तो ये पॉसिबल नहीं रहता अभी के ये जो भी सिनेरियो चल रही। तो ऐसा नहीं है कि जब फेसबुक आया हुआ था तो मतलब इतने सारे फीचर्स थे, यू नो द वी ग्रो ग्रेजुअली। सो फॉर एग्जांपल फेसबुक एज फार एज रिमेम्बर 2000 या 2002 में लॉन्च हुआ था। तो बहुत सिंपल दिखता था फेसबुक। अगर आप फेसबुक का साइट देखोगे पहले का तो बहुत सिंपल था, पर जैसे जैसे ये ग्रोथ होते रहे इन द फ्यूचर, एंड जैसे जैसे जो भी इंजीनियर है वो ग्रोथ, तो वो जो एप्स या वेबसाइट का एक्सपीरियंस है वो यूज करने। जैसे अब अभी फेसबुक का है तो फेसबुक का जैसे इंस्टाग्राम भी आ गया है, व्हाट्सएप भी आया हुआ है, तो आप लोग सभी व्हाट्सएप ग्रुप पे ही हो। तो जैसे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आप जैसे किसी से भी आपको बात करना है या किसी से भी कुछ भी करना है, तो आप जैसे व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज डाल सकते हो और उसमें मतलब सेकंड भी नहीं लगता, और फिर जो नेक्स्ट पर्सन है उसे मैसेज चले जाता है। तो ये कैसे पॉसिबल, ये बस है पॉसिबल कोडिंग के ही थ्रू। मतलब ऐसे भी है पॉसिबल कि आप बिना कोडिंग के थ्रू बहुत सिंपल ऐप क्रिएट कर सकते हो। पर आपको अगर कोई कॉम्प्लेक्स ऐप क्रिएट करना है जिसमें ना यूजर एक्सपीरियंस आपको बहुत अच्छा रखना है, मतलब जो भी टास्क है ना 1 से 2 सेकंड के अंदर उसको अकॉम्प्लिश करना है, तो वो आप कोडिंग के थ्रू ट्राई कर सकते हो। I mean, so this is the third thing that we can create apps and website using coding. So here I took the example of the Facebook.
विच यू ऑल आर फेमिलियर। करेंटली आप लोग जो सेशन लाइव ज्वाइन किए वो भी अभी फेसबुक पे ही किए हो, आई होप सो। तो वो भी जो फेसबुक का ऐप क्रिएट हुआ है वो भी कोडिंग के थ्रू ही किए हुए हैं। सो द फोर्थ पॉइंट इट इज enforces you to unlock your creativity. So for example, when you will start learning coding, okay, so when you will start learning coding, that if you want to create a simple app, that if, for example, I will take that you want to create a clone of Facebook, that you want to create a simple version of Facebook just for your school, that in between the school you can connect with all of your friends, all of your faculties, and you want to create an app for that. So when you will write down the problem, okay, this I want to create the apps for the, I mean, to connect the people in my school and also to connect with all the teachers. तो यहाँ पे कैसे हो, जब आपको तो ये बहुत सिंपल लग रहा है, पर जब आप ये क्रिएट करना स्टार्ट करोगे तो फिर कैसे, जैसे अभी आप, फॉर मैं एग्जांपल लूंगा, अगर मेरे को किसी कोई ऐप क्रिएट करना है, बस मेरे को दो पर्सन को कनेक्ट करना है, दैट आई कैन चैट विद दिस पर्सन एंड दिस कैन चैट विद मी, दैट्स इट। तो वो प्रॉब्लम बहुत सिंपल है। पर जैसे अगर आप स्कूल के लिए एक ऐप क्रिएट कर रहे हो, तो जैसे स्कूल में 1000 स्टूडेंट्स रहते हैं, 1000 या 2000 स्टूडेंट्स रहते हैं, तो वहां पे आपको अपनी जो क्रिएटिविटी है कि मैं ये जो ऐप क्रिएट करूँ, इसमें मैं क्या सॉल्यूशन इसमें लिखूं, मतलब क्या एल्गोरिथम्स अप्लाई करूं, कि मतलब जो स्पीड है वो ऐसा नहीं कि मैं एक मैसेज सेंड कर रहा हूँ तो जैसे 2 मिनट लग रहा है एक मैसेज डिलीवर होने में। तो एक मैसेज अगर मैं सेंड कर रहा हूँ तो जैसे वो विद इन सेकेंड्स होना चाहिए डिलीवर। तो वहां पे कैसे वो आपको क्रिएटिव माइंड आपको यूज करना पड़ेगा, मतलब बहुत सारे एल्गोरिथम्स है वो आपको सोचना पड़ेगा कि कौन सा बेस्ट एल्गोरिथम्स मैं इसमें अप्लाई करूँ कि इसका जो मैसेज डिलीवर का जो भी टाइम लैप्स है 2 सेकेंड रहे या 1 सेकेंड रहे। So this is when you will learn some advanced coding stuff. Then you will realize that okay, so here where I am using my creativity to create anything that can help solving the millions of people. अभी आप अभी सिंपल सा सिनेरियो देख लो कि जैसे अभी जो ये कोवैक्सीन का चल रहा है, मतलब फॉर एग्जांपल जो वैक्सीनेशन स्लॉट आपको बुक करना है, आप अगर सोचो कि जैसे आपको मैनुअली कहीं पे वैक्सीनेशन स्लॉट जाके बुक करना हो तो ये कितना प्रॉब्लमेटिक आपके लिए रहता। तो जैसे हम लोग के जैसे जो है सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, उन्होंने वो वेबसाइट क्रिएट किए हुए हैं कि जहाँ पे जो मिलियंस ऑफ यूजर्स ऑल ओवर इंडिया में है, वो विद इन अ क्लिक अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, और फिर विद इन अ क्लिक अपने आप को वैक्सीन का स्लॉट जैसे अवेलेबल हो वो आपको रजिस्टर ये बुक कर सकते हो आप स्लॉट। तो बस वहां पे आप सोचो कैसे हम लोग जो डे टू डे लाइफ प्रॉब्लम्स है इतने कॉम्प्लेक्स, कि जैसे अगर मेरे को मैनुअली जाके अगर फॉर एग्जांपल दिल्ली में लक्ष्मी नगर में जाके स्लॉट बुक करना हो, और अब वहां पे अगर 5,000 लोग एक दिन में जा रहे स्लॉट बुक करने, तो फिर क्या सिचुएशन क्रिएट होगा। और अभी आपको बस एक सिंपल सा साइट है, या तो आप आरोग्य सेतु ऐप के थ्रू कर लो, या फिर cowin.government.in जो वेबसाइट है उसके थ्रू आप ये कर सकते हो स्लॉट बुक। So this is the way I want to show you that how coding can be useful in the upcoming future, that how you can solve such a complex problem. You can embrace the human experience, the people living behind you with the help of coding. And the last thing is that better career opportunities. So for example, I know that the most of the students who are in class 8 to 10 or maybe below that, I'm not 100% sure. So if you wanna be an engineer in the future, just I'm taking a general case, okay. So mostly आपने अभी देखा होगा जिसको भी इंजीनियरिंग करना है, they prefer that I want the branch as computer science or I want the branch as information technology. तो वहां पे उनको क्यों ये सोच रहे हैं कि बेटर, मतलब ये मेरे को कंप्यूटर साइंस चाहिए। एक तो रहता है रीजन कि जैसे बहुतों का इंटरेस्ट होता है। सो व्हेन आई स्टार्टेड कोडिंग, तो मैंने 12 में ही कोडिंग स्टार्ट किया होता, फिर मेरे को वहां से इंटरेस्ट जनरेट हुआ। और बहुतों का ऐसा मतलब रहता है कि जैसे उन्होंने देखा हुआ करंट सिनेरियो दैट इन आईटी वर्ल्ड देयर आर मच मच बेटर अपॉर्चुनिटी एंड मोर अपॉर्चुनिटी, मतलब जो ऐसे अभी जो चल रहे ट्रेंड, इतने सारे प्रॉब्लम्स, इतने सारे आईटी कंपनी, वो सब इनोवेटिव सॉल्यूशन निकाल रहे प्रॉब्लम्स के। मतलब अभी जैसे मैं थोड़ा कॉम्प्लेक्स, अगर कॉम्प्लेक्स नहीं जाऊँ, मतलब मैं थोड़ा सा जाऊँ बियॉन्ड द सिंपल कोडिंग, अभी जो न्यूली ट्रेंड चल रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, तो उसमें हम लोग मशीन को सिखा रहे हैं हाउ टू बिहेव लाइक अ पर्सन। सो दिस इज वेयर वी आर राइट नाउ। और फ्यूचर क्या हुआ क्या पता, फ्यूचर ऐसा हो कि मतलब आपको कुछ भी नहीं करना पड़े, घर पे ही सब कुछ आपको हो जाएगा। आपको जो भी जैसे भी आपको फूड ऑर्डर करना रहता है तो जोमेटो से आप फूड ऑर्डर कर लेते हो। तो वैसे ही अगर आप फ्यूचर में कंप्यूटर साइंस लेना चाहोगे तो वो है मतलब बेटर कैरियर। मतलब जैसे अभी मैं जैसे फॉर एग्जांपल यहीं से अभी मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, मतलब कंप्यूटर साइंस से मैंने किया, तो मेरे को कोडिंग का नॉलेज था। तो मेरे को मतलब अभी जो
जो करेंट माई प्रोफेशन सॉफ्टवेयर में मेरे को अच्छी कैरियर अपॉर्चुनिटीज मिली है. सो दिस इज ऑल द पॉइंट्स what I think about the coding and how coding can help you. So अगर अब तक कोई डाउट हो तो फिर पूछो, so I can answer that for now. If you do have any doubt. Any doubt till now? Yeah, if you have any doubts, you can ask. I will just wait for a few minutes, else I can move forward. So if you have any doubt, you can ask anything related to coding. That if you have anything in mind. So I can see one question that which language is used in coding. So it's not like the language is limited here. There are many languages, but it depends upon your needs that what you want to achieve with the coding, what you want to develop. For example, if I want to develop an app, I will use Java. If I want to develop a website, I will use HTML, CSS, JavaScript. So it depends upon your needs that which language are you going to use. So any more doubts you can ask. I'll just wait for a few minutes. Okay, I can see here a question. What is the mean of complex? Okay, complex mean you can say that the difficult problem. मतलब जो बहुत ज्यादा ही डिफिकल्ट है. फॉर एग्जाम्पल मैंने एग्जाम्पल अभी दिया कि अगर आपको जैसे 1 लाख नंबर का सम करना है, अगर आपको किसी ने बोला कि इस नंबर का सम करके दिखाओ 1 to 1 लाख, आपको कितना टाइम लगेगा मैं भी इमेजिन नहीं कर सकता, और वो एट द एंड जो रिजल्ट्स आपके आएंगे वो सही रहेंगे या नहीं ये भी नहीं पता है. पर आप यहाँ पे कोडिंग का यूज करोगे. फॉर एग्जाम्पल आई शो यू इन द नेक्स्ट सेशन मे बी टुमारो और द डे आफ्टर टुमारो. यू कैन जस्ट डू दैट कैलकुलेशन इन विद इन अ सेकेंड. Okay, I hope. I think there's no question now. I can move forward. Okay, so this was the first thing of what I mentioned, what we will be doing the today's session. So moving forward to the next content, that requirements for taking the complete 15 days session. So the first requirement, and it's complete and it's compulsory, that you need to have a laptop with you. So you can't code what I will say in your phone if you are watching right now through your phone. अगर आप अपने फोन से भी ये सेशन ज्वाइन किए हो तो आज के लिए तो ठीक है. तो आज तो मैं जस्ट ओवरव्यू बता रहा है कि मतलब क्या क्या करने वाले हैं नेक्स्ट 15 डेज में, और क्या क्या कैसा स्ट्रक्चर रहेगा सेशन का, और मतलब ब्रीफ अबाउट कोडिंग. पर अगर आपको आगे का सेशन मेरे साथ करना है, मतलब जो मैं करूँ वो अगर आपको भी करके ट्राई करना है, तो आपके पास एक लैपटॉप रहना बहुत जरूरी है. एंड द सेकंड इज दैट यू नीड टू हैव अ गुड इंटरनेट कनेक्शन, क्योंकि जैसे अगर आप लैपटॉप से ज्वाइन करोगे तो आप तो सेशन देखने के लिए अभी तो आप फोन में नेट यूज कर रहे हो, तो उस वक्त आपको जैसे हॉटस्पॉट या कुछ चाहिए. द थर्ड एंड फोर्थ रिक्वायरमेंट इज दैट you need to have Python installed. So the Python is just a coding language. So you need to have this installed. तो आप अगर आज ट्राई कर सकते हो तो अच्छी बात है. अगर नहीं कर सकते इंस्टॉल तो फिर कल मैं ये बताऊंगा कैसे आप अपने लैपटॉप में पाइथन इंस्टॉल कर सकते हो. और उसके बाद जैसे पाइथन इंस्टॉल होने के बाद हम लोग टेस्ट भी करेंगे कि सक्सेसफुली पाइथन इंस्टॉल हुआ है या नहीं. तो ये पाइथन और पाई गेम जो हम लोग गेम डेवलप करने वाले एट द एंड ऑफ 15 डेज, तो उसमें हम लोग यूज करने वाले कि वो ये मतलब एक फ्रेमवर्क है, इसके हेल्प के थ्रू हम लोग वो गेम डेवलप करेंगे.
तो ये आप एट द एंड ऑफ 15 ये मतलब जो हम लोग ये कोडिंग सेशन गेम डेल तो उसमें यूज हो। तो फर्स्ट दो थिंग तो आप लोग को कंपलसरी अरेंज करना पड़ेगा, लैपटॉप और इंटरनेट कनेक्शन। वो आप लोग आज ही देख लेना, मतलब अगर किसी फ्रेंड्स का भी लैपटॉप अरेंज होता हो या आपके पेरेंट्स के लैपटॉप हो, तो वो उससे थ्रू आप कल का जो सेशन रहेगा 4 से 5 वो आप ज्वाइन हो सकते हो। और ये जो पाइथन और मैंने पाइगम बताया, तो ये मैं कल even I will help you how to install this, that I will tell you the steps. Okay, you can download the Python from here, and then you wanna install Pygame. So these are the two things I will help you tomorrow installing. And if you wanna try this today, so this will be the task for you, so that you can try once to install Python. And if you have installed the Python, then that's pretty very much better. And if it's not, then I will help you tomorrow to install Python in your laptop. So some of the students have written in comment that how to download Python and Pygame. So for now, for today, it's the simple task for you. If you can't complete this task, then I will help you tomorrow installing this. Don't worry with that. Okay, so one of the students have written what are the system requirements. So for the system requirements, you just if you are having 4 GB of RAM and just 500 4 GB of RAM and 500 GB of hard disk. So that's pretty much nothing more than that, because we are not going to do any complex coding stuffs here. So these are the minimum system requirements every laptop has. So we don't need to think much about that. Okay, yeah. So the students who don't have laptop, they can use computer also, not a problem. Just it's that you can't use phone for the next coding session if you wanna try out what I am doing here, and if you also wanna try that at your end. So you can't use that, I mean your phone for that. You need to have a laptop or a computer with you with a good internet connection. So these are the, you can say that, the compulsory requirement. And the next thing I mentioned for taking this session is the Python and Pygame. I will help you installing that tomorrow if you can't install this. Okay, there's a student is asking, I have a doubt. You can ask your question. Okay, I am watching just here. I can answer you before I move forward. Okay, I think now we can move forward. So आप लोग को requirements पता चल गया क्या compulsory रहना चाहिए आप लोग के पास। अगर कोई doubt हो तो फिर वो ये session के end में हम लोग को देख सकते हैं। Okay, so this is the this is the game which will be developed in the end of 15 day सेशन, और इसके बेसिस पे आपका एक सिंपल कंपटीशन रहेगा। तो दिस इज द नेम ऑफ गेम इज स्नेक एंड एप्पल गेम। सो स्नेक एंड यू नीड टू ईट द एप्पल, एंड जैसे आप जितने एप्पल ईट करोगे एक वन टाइम में, तो वो आपका स्कोर इंक्रीज होते रहेगा। अगर आप बॉल को हिट कर देते हो तो देन द गेम विल बी ओवर। सो दिस इज द गेम यू विल बी डेवलपिंग एट द एंड ऑफ 15 day session. So you can have a look for now. आप लोग ने ये गेम तो पहले खेला ही होगा, ये तो पहले किसी भी फोन में रहता था स्नेक गेम। तो बस यहाँ पे जो भी वो हिट करने के लिए वो एप्पल है, और अगर आप बॉल को हिट कर देते हो देन द गेम विल बी ओवर। Okay, so we can move forward now.
ओके, सो कमिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ द नेक्स्ट डे सेशन, तो आप लोग को पता तो रहना चाहिए कि मतलब जो नेक्स्ट डे के सेशन होने वाले वो कैसे रहेंगे। मतलब आज के सेशन तो बस एक ओवरव्यू था कि मतलब हम लोग क्या डेवलप करने वाले हैं, व्हाट इज मीन बाय कोडिंग, हाउ कैन यू स्टार्ट कोडिंग, कोडिंग की क्या करियर अपॉर्चुनिटीज है आगे, वो भी मैंने ब्रीफ बताया ही। और जो अभी जनरल जो सिचुएशन है उससे कोडिंग के थ्रू कैसे कोई भी प्रॉब्लम अभी सॉल्व हो रहे हैं, तो वो भी आप लोग ने देखा है। फॉर एग्जांपल यू कैन सॉ द फेसबुक ऐप एंड द नेक्स्ट थिंग यू सॉ द कोविन पोर्टल वी आर यूजिंग राइट नाउ फॉर द बुकिंग द वैक्सीनेशन स्लॉट। सो कल के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं फॉर द इंस्टॉलिंग द रिक्वायरमेंट्स। सो द रिक्वायरमेंट्स विल बी पाइथन एंड द पाइथन फ्रेमवर्क। सो वी विल इंस्टॉल दैट। आई विल बी हेल्पिंग यू दैट कौन से साइट विजिट करना है, फिर डाउनलोड होने के बाद कैसे उसे इंस्टॉल करना है। तो मैं मुझे लगता है कि सबके पास तो विंडोज ही होगा ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ऐसे ज्यादा कुछ प्रॉब्लम होगा नहीं इंस्टॉल करने में। बस आप लोग एक लैपटॉप या कंप्यूटर अरेंज कर देना अगर आपको मेरे साथ ही सेशन करना है, तो मतलब फॉर द नेक्स्ट 10 to 15 days। एक बार ये कल हम लोग इंस्टॉल कर लेंगे, फिर परसों से फिर हम लोग देखेंगे। तो हम लोग जैसे इसमें पाइथन यूज करने वाले गेम डेवलप करने के लिए, तो वी विल सी फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज द बेसिक ऑफ पाइथन कोडिंग। तो जैसे हाउ यू कैन प्रिंट योर नेम यूजिंग पाइथन, ओके, तो how you can perform a simple operation using Python. For example, sum of four numbers, sum of 100 numbers. How you can find the maximum number using Python. How can you find the minimum number using Python? तो हम लोग कैसे मतलब जैसे जो बेसिक ऑपरेशन है, तो जैसे जो पाइथन के बेसिक ऑपरेशन है, जो जैसे जो भी जब पाइथन स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो वो किसी को भी थोड़ा देखना ही रहता है। अगर मेरे को इतना पाइथन का पता है तो मैं आगे का फिर थोड़ा कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन जो है वो देख सकता हूँ। तो ये हम लोग बेसिक और पाइथन कोडिंग 1 से 2 दिन देखेंगे। अगर आप लोग को अगर ज्यादा दिन का भी चाहिए, मतलब 2 दिन से ज्यादा भी अगर कुछ करना है, ट्राई करना है, तो फिर हम लोग वो भी कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। and the after this we will be knowing about the pygame framework। so python का एक फ्रेमवर्क है pygame, जो हम लोग गेम डेवलप करने के लिए यूज करने वाले हैं, जो मैंने आपको पिछले स्लाइड में दिखाया, द स्नेक एंड एप्पल गेम। ओके, सो वी विल जस्ट आई विल गिव यू द ओवरव्यू ऑफ दिस फ्रेमवर्क। सो इससे मतलब जैसे मैं तो बस ये सिंपल सा गेम क्रिएट कर रहा हूँ, पर और भी जो कुछ कॉम्प्लेक्स गेम है मैं वो आपको दिखा सकता है। ये कुछ कुछ गेम्स है, यू कैन चेक आउट एट योर एंड। So these games have been developed using Python framework. And if after the session or if you are interested to develop any new game, so you can try out this framework. You can use your creativity and you can put up some efforts to develop this game. And after that, once you have learned in this session, then I'm sure that the next you can develop a single game by your own too. तो जो हम लोग ये पाइथन और ये पाइगेम का थोड़ा ओवरव्यू हो जाएगा, मतलब ऐसे पाइथन के बेसिक कोडिंग्स भी पता चल जाएगा। देन वी विल बी डेवलपिंग द एलिमेंट्स ऑफ द गेम। सो जैसे आप लोगों ने पिछले स्लाइड में देखा होता, तो एलिमेंट्स ऑफ द गेम मतलब जो गेम के रिक्वायरमेंट, जैसे गेम फॉर एग्जाम्पल स्नेक एंड एप्पल गेम में पहला चीज क्या है कि हम लोग को एक स्नेक डेवलप करना पड़ेगा। दूसरा चीज क्या है कि हम लोग का एप्पल डेवलप एप्पल क्रिएट करना पड़ेगा। फिर जो स्क्रीन है जिसमें वो हम लोग गेम प्ले करेंगे वो क्रिएट करने पड़ेंगे। फिर उसके बाद जो हम लोग एरो कीज के थ्रू जो गेम प्ले करेंगे, जैसे अप राइट डाउन लेफ्ट, वो मतलब इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। जैसे अगर मैंने राइट एरो क्लिक किया या मैंने डी क्लिक किया अपने लैपटॉप के कंप्यूटर में, तो वो राइट जाना चाहिए। मैंने लेफ्ट एरो क्लिक किया तो लेफ्ट जाना चाहिए, मैंने अपर वाले क्लिक किया तो अपर जाना चाहिए। तो ये हम इम्प्लीमेंट करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कैसे अगर किसी ने वॉल हिट कर दिया, किसी यूजर जो है कोई भी अगर वॉल हिट कर देता, तो फिर कैसे वो मतलब गेम ओवर हो जाएगा एंड हाउ यू कैन स्टार्ट द न्यू गेम। सो पहले हम लोग ये एलिमेंट्स डेवलप करेंगे इंडिविजुअली एक एक करके, एंड देन वी विल इंटीग्रेट ऑल दोस एलिमेंट्स टू डेवलप द फाइनल गेम। जैसे हमने सब कुछ डेवलप कर लेंगे पहले एप्पल, फिर जैसे मैंने जो गेम डेवलप करने वाले तो उसमें हम म्यूजिक भी ऐड करने वाले हैं, तो हम लोग बैकग्राउंड म्यूजिक भी ऐड करेंगे। जैसे जैसे फिर गेम ओवर होने के बाद जो ये बर्स्ट का जो वो रहता है साउंड, तो वो भी ऐड कर सकते हैं। तो हम लोग जो गेम का इंडिविजुअल एलिमेंट से पहले वो डेवलप करेंगे, और उसके बाद ये सारे एलिमेंट्स को लेके एज अ पीस, तो फिर देन वी विल इंटीग्रेट दोस एलिमेंट्स एंड देन वी शैल डेवलप द फाइनल गेम एट द एंड। And yeah, so for the 10 to 12 days, I think we will take to develop the game. And at the end of this, we will have a small competition basis of what you have learned in this coding session. So either you can, I will give you some task to manipulate the game. So मैंने जैसे एक एप्पल क्रिएट किया, तो मैं आपको कह सकता हूँ आप 2 एप्पल क्रिएट करके दिखाओ। एक स्नेक, और जैसे अभी जो स्नेक का स्पीड है वो आप ऑप्शन डालो कि स्नेक का स्पीड इंक्रीज कर सके, मल्टीप्लेयर गेम बना के दिखाओ।
So on the basis of what we have learned in the past 10, what we'll be learning in the past in the next 10 to 15 days, we'll have a small competition on the base of that. And using that, we will provide the prizes and the certificate to all the winners. Those we will be taking part in the competition, and those will be developing the game or completing the task as mentioned. So this will be the structure of the next day session for the next 10 to 12 days. So any doubt till now? So this was the structure of the next day session. Okay, so as I mentioned, the coding overview, the what we'll be developing in this session, and the requirements for taking this session, and the structure of coding this session. So we can have 10 to 15 minutes for the query session now. आप लोग अगर कोई भी डाउट्स हो कोडिंग से रिलेटेड या कुछ भी जो अभी के सेशन वो तो आप ये कमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हो एंड आई विल ट्राई टू आंसर दैट क्वेश्चन. Okay, I have a question that sir, we can develop this games like PUBG from the software. Yeah, you can develop games like PUBG from with the help of coding. Okay, there's a student Kailash Saini. He is saying I have a doubt. So you can ask your question, not a problem. You can ask your question in the comment box. Yeah, we can make app for the mobile using coding. Okay, you can install the latest version of Python 3.6. That that will be using in this session. Okay, so we can use online Python compiler for the basic stuffs, but for development of the game, you need to have Python installed in your computer or a laptop. Yes, we can create any sort of apps, whether it's educational or the social apps, as per our requirements with the help of coding. 'Okay, someone has written that I have made a chatbot program in phone. Okay, that's great. I am sure that you might have used Python for the development of that. Okay, so the Python version will be 3.6. 3.6, the latest one. You can download the latest version. So if you want me to repeat any point, you can just add that also. Yes, we can create educational apps using this coding.
Okay, so one of the students have installed 3.9, so that's also great, not a problem. You can install version any version above 3.0. So you can't use phone for the development of the game which you will be developing. You need a laptop or a computer with you for that. Yeah, tomorrow the session will be how to develop, I mean how to install, sorry, Python and Pygame in your system. Okay, so I think tomorrow is Sunday, so tomorrow there won't be any session. After tomorrow, I mean on Monday, the next session, we will be looking how to install Python. Okay, so that's not a problem. So I think everything is clear now. Okay, so to join the class with computer, just you can use the link shared with you, and you can join similarly as you use it for your phone.